Yes, come on. Very good morning, my dear friends. Yeah, good afternoon, my dear friends. Come on. So, friends, we were discussing the topic of income from house property. In that, a lot of interesting points we have done. And in fact, the entire concepts are completed. We have completed everything. Now, we're just left with only one question in that topic. And if we complete that question, we'll be done with this topic. Clear with that, everybody, my dear friends? Are we ready, all of us? Good, fair enough. दिख रहा है? Chalo, let's once quickly revise and then we'll start, my dear friends. Come on, tell me what is section 22 beta? Chargeability section. Section 23(1). Computation for let out. 23(2). Computation for self-occupied. 24A. Standard deduction at the rate of 30%. 24B. Interest on borrowed capital. Section 25. Interest payable outside India is not allowed as deduction if tax has not been deducted at source and there is no person in India who may be regarded as an agent. 25A. Taxability of recovery of unrealized rent and arrears of rent. It is taxable in the year of receipt after reducing standard deduction at the rate of 30%. Barabar hai na beta? Everyone. 26. Co-ownership. Aaj hi padhaya. 26 co-ownership. We discussed. Wonderful. 27. Deemed owner. We have revised like crazy now. I think we are clear with that totally, my dear friends. Sir, house property, conceptually we have completed everything, but one question is still pending in our material to solve. And if we solve that question, we'll complete this topic called house property. Then we can start something new today. Are we clear, everybody? Are we ready, all of us? Come on, pick up your material. Let's look at that question, my dear friends. We are done with question number 1, 2, 4, 5. The third one is pending, I believe. Page number 165. Question number 3, my dear friends. Come on. Kindly please look at that question. Friends, come on. Please look at that question number 3, my dear friends. दोस्तों, question देखे क्या? बेटा बोलो ना यार. You shift here. Huh? See the question. Two brothers. Who are those, sir? Two brothers. Guys, madam, I'll change your place. If you talk, I'll change your place. इसलिए बोल रहा हूं, कुछ बोलो भी मत. देखो, two brothers Arun and Bimal are what, sir? Co-owners. Co-owners means co-owners. Wow, ये क्या मजे ले रहे यार. Co-owners basically means joint owners, where they combinedly own the property. Arun and Bimal are co-owners of a property with equal share. In the question only they told they have got equal share. Property was constructed during financial year 2008-2009. Property consists of 8 identical units and is situated in Cochin. I repeat once again, there are 8 units in the property and the property is in Cochin. Where is Cochin? Any idea? India. Cochin is in Kerala. Kerala, sir, Kerala. Kerala is one state name. Kerala नाम ही नहीं सुने क्या अपन? सिर्फ महाराष्ट्र. सुने क्या? क्या हो बेटा? क्या बोल रहे हैं आपको? Kids, Pogo batch. Okay, Pogo batch, get back. Come on, my dear friends. So, Arun and Bimal are co-owners of the property and they have got how many units, my dear friends? 8 identical units. See now. And is in Cochin. During 23-24,
each co-owner occupied one unit for residence. मतलब 8 में से Arun is occupying one unit, Bimal is occupying one unit. How many are still left out? Excellent, see that. And the balance of 6 units were let out at a rent of 12,000 per month per unit. Observe that word, it is per month per unit. Next. Municipal value of the property is 9 lakhs. Municipal tax is 20% of municipal value, which were paid during the year. Wonderful, it is paid. When it is paid, what will you do, my dear friends? We will reduce. Next. Other expenses, repairs, क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे. इंश्योरेंस प्रीमियम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे. क्यों? No expense can be taken as deduction because law is directly told we'll give you something called standard deduction at the rate of 30% of NAV. Your repairs, painting, water, electricity, they are all irrelevant. बराबर है ना बेटा? Next slide. Interest payable on loan taken for construction of house 3 lakh rupees. 3 lakh का interest है. टमाटर 2 लाख restrict करेंगे. अरे इसमें लेट आउट भी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है ना यार. बराबर है ना बेटा? Friends, are we in the class? Which class? Tax class only, no? Shiva Teja, able to see that? Wonderful. See, one of the let out units remained vacant for how many months? Sir, not all the units. One of the unit is vacant for 4 months. Arun could not occupy his unit for 6 months as he was transferred to Chennai. He does not own any other house. He does not own what, beta? Any other house. Come on, next line what they gave you, see. Compute income under income from house property of 2 brothers. For assessment here, 24, 25. That's it. A very brilliant question, my dear friends. Are we ready, everybody? Sir, क्या कैसा करना है अपने को सुनो. Whenever a question comes on co-ownership, how you have to solve is self-occupied solve separately, let out you solve combine, then you split. मतलब लेट आउट एक साथ ही करो. GAV, म्युनिसिपल टैक्स, NAV, 24A, 24B सब कर दो. जो फाइनल फिगर आएगा 50% अरुण, 50% बिमल. ट्रेडिशनली वो भी अलग अलग करेंगे. करो, टाइम बचाने की बात है ना सब कुछ. फ्रेंड्स, क्लियर विद दैट एवरीबॉडी? चलो लेट्स स्टार्ट. कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 3 ना. As per section 26, as per section 26, in case of co-ownership, in case of co-ownership where share of co-owner is ascertainable, as per section 26, in case of co-ownership where share of co-owner is ascertainable, then co-owners shall be taxed separately. Co-owners shall be taxed separately in respect of their share. Co-owners shall be taxed separately in respect of the share. As per section 26, in case of co-ownership where the share of co-owner is ascertainable, then co-owners shall be taxed separately in respect of their share. I think this language is clear for all of you. सबको समझ में आया बेटा ये पॉइंट? चलो बेटा, how do we calculate now? Self occupied. ठीक है दोस्तों? Self occupied अरुण का निकालना है अपने को, and also for Bimal. And we are solving problem under optional, because if it is default the answer will definitely become 0 0. चलो optional में क्या है बेटा? What is the starting point? Come on.
net annual value NAV nil nil less deduction under section 24B. Interest on borrowed capital. कितना हो रहा बेटा? बोलो. नहीं, गलत है. Sir, interest on borrowed capital, what you have to do is 3 lakhs is the total figure. बराबर है ना? सेल्फ ऑक्युपेड का कितना है? 2/8. एक अरुण का, एक विमल का है. ठीक है, 1/8 अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये फिगर कितना आ रहा है बोलो? 75,000. अब मुझे बोलो बेटा, 75,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा? 37,500. 37,500 बराबर नो दोस्तों, बोलो. एंड लोन इज टेकन फॉर व्हाट पर्पस? कंस्ट्रक्शन ऑफ. और लोन लिया कब थे इसमें? ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई टेक इट 37,500 37,500 बराबर ना बेटा? अगर समझो बेटा, एक छोटा सा पॉइंट इधर मैं बोलूंगा आपको. अगर समझो क्वेश्चन में बोलते रिपेयर्स 30,000 फॉर अरुण, 30,000 फॉर बिमल. फॉर ईच कोनर लिमिट इज सेपरेट. बताया ना बेटा? पर इधर मैं लिमिट अप्लाई नहीं करूंगा बिकॉज 30,000 तो लिमिट ही नहीं है. तो कितना आएगा बेटा? ये 37,500 एंड दोस्तों क्लियर है क्या? सो व्हाट इज डन नाउ? सेल्फ ऑक्युपाइड. चलो लेट आउट. एक साथ करके डिवाइड करना है या डिवाइड ही करना है स्टार्टिंग से ही? क्या बेटा? एक साथ करना है? एग्जैक्टली. लेट आउट. कम ऑन, टेल मी व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? क्रॉस एनुअल वैल्यू. करेक्ट नो? But we don't know what is that figure. Correct? We need to compute that gross annual value. तो आप मुझे पहले बोलो, क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू दिए क्या? फेयर वैल्यू दिए क्या? क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दिए क्या? क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट है क्या? बोलो. तो व्हाट विल आई राइट हियर इज एक्सपेक्टेड रेंट ब्रैकेट municipal value is considered since fair rent and standard rent is not given. समझ रहे क्या बेटा? Since fair rent and standard rent is not given, since that information is not there, we are taking what value बेटा? Municipal value. बेटा समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? चलो बताओ कितना फिगर है ये? 9 lakhs. रॉन्ग आंसर. 9 lakhs into 6/8. वेरी गुड. अरे 9 लाख तो पूरा घर का है ना बेटा? 9 lakh is for the house, no? We should talk only for let out unit. कितना है? 6 lakhs.
चलो नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड। कम बोलो, रेंट रिसीव्ड वर्किंग क्या है बोलो। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वी गॉट 6,75,000। 6/8 करना पड़ेगा ना, लेट आउट वाला पार्टी है। हाँ बोलो कितना है रेंट रिसीव्ड, नहीं फिगर वर्किंग बोलो आप। 12,000 into 6 units into 12 months minus 12,000 into 1 unit into 4 months, बिकॉज 1 यूनिट 4 महीना वेकेंट है ना बेटा। सब पूरा 6 यूनिट है, उसमें 1 ही यूनिट वेकेंट है, वो भी 4 महीना वेकेंट है। $8 lakhs, that's it. Therefore, GAV will be 8,60,000. Sir, I strongly believe that we are understanding बेटा। समझ में आ रहा ना सबको? गुड। 6 यूनिट है बेटा, उसमें 1 यूनिट ही वेकेंट है, वो भी 4 महीना वेकेंट है। नेक्स्ट, क्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, कितना बेटा? $1 लाख, समझे ना कैसा है सर? 9 lakhs इंटू 6/8 इंटू 20%, समझे ना बेटा? 6/8 नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। नेट एनुअल वैल्यू बोलो बेटा, कितना है नेट एनुअल वैल्यू? नो प्रॉब्लम, समझ गया मैं, कुछ भी नहीं पूछा मैं, आई अंडरस्टूड, समझ गया। नेट एनुअल वैल्यू कितना है बेटा? 6 lakhs। अरे तेरे को मालूम है मेरे को उतना हिंदी नहीं आता, इतने बड़े बड़े वर्ड्स का। हाँ 6,80,000 1 का सर, आप समझ गया। देखो कितना सिंपल है, 6,81,000। हाँ लेस डिडक्शंस अंडर कौन सा सेक्शन बेटा? 24A standard deduction with the rate of 30% of NAV। कितना है दोस्तों? 2,04,300, 300, ये पता है। $24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बराबर है बेटा? कितना इंटरेस्ट? 2,25,000। लेट आउट क्या है आंसर? लेट आउट का क्या बोले बेटा? 2,51,700, ये हो गया लेट आउट का आंसर। पर उसमें अरुण का शेयर कितना है? 50%। सर जैसा अपन हमेशा सॉल्व करते वैसे ही क्वेश्चन है, बट जो आंसर है 50-50 डिवाइड कर रहे हैं बस। कितना है? बिमल come on, check in calculator. Same figure without calculator? How man, how? बचपन से ऐसे ही है? Not after joining this class?
Income from house property of Mr. Arun. Bole beta, what is the income house property of Arun? 88,000. Next. Of Mr. Bimal. That's it. That is the story and the history of Arun and Bimal. Pretty comfortable question. क्या हुआ दोस्त? दोस्तों क्लियर है क्या क्वेश्चन? सबको समझ में आया क्या ये पॉइंट? एवरीबॉडी? सर लाइक हाउ वी सॉल्व नॉर्मल क्वेश्चन लाइक दैट ओनली, बट जस्ट दैट इट इज को ओनरशिप. डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा 50-50. आर वी क्लियर विद दैट एवरीबॉडी? आई विल डिक्टेट वन क्वेश्चन. आई वांट यू टू सॉल्व दैट. रेडी? करेंगे क्वेश्चन? चलो बेटा. गुड. मिस्टर विमल. अरे अरुण हो गया, बिमल हो गया, इस बार विमल बोलो. वही मिस्टर विमल provides following details. Mr. Vimal provides following details. Mr. Vimal provides following details and requests you to compute. And request who beta? You. No. Request you to compute income from house property. Request you to compute income from house property. For assessment year, request you to compute income from house property for assessment year 24-25. बेटा क्लियर है क्या? बोलो ना यार कुछ. राइट बिलो. $75% is let out for a change. हमेशा अपन ज्यादा परसेंटेज सेल्फ ऑक्युपाइड बोल रहे हैं ना. 70% is let out and 25% is self occupied. ठीक है? राइट बिलो. He has taken loan of 50 lakhs at 10%. He has taken loan of 50 lakh at 10% on 1/6/2021. What's this 2021? Okay, full stop. Construction completed on सोच समझ के सॉल्व करो बेटा. पहले बोल रहा हूं. कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 31st August 2023. 31st August 2023. Okay, everyone sir. Next, loan is repaid on
Loan is repaid on 31st December 2023. Municipal value 12 lakhs. Fair value 15 lakhs. 15 lakhs. Standard rent 18 lakhs. 18. Good. Right below. Rent per month 1,20,000. 1,20,000. Unrealized rent bracket condition satisfied. एक मिनट प्लीज. समय कितना दिया रेंट पर मंथ? 1,20,000 ना. Unrealized rent 7 months. हाँ ऐसा ही क्वेश्चन है. Unrealized rent 7 months. अरे करो यार, मतलब लास्ट क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का. With this will complete. Unrealized rent 7 months. Okay. Vacancy. Some are telling 7 months. साल में 12 महीने होते बेटा. Unrealized rent 7 months. Vacancy 1 month. Hey, vacancy 5 months क्या रहे कुछ भी. Unrealized rent 7 महीना, vacancy 1 महीना. ठीक है ना? Done. Next. Municipal tax. Municipal tax 5% of municipal value. Municipal tax 5% of municipal value. दोस्तों क्लियर है? पक्का? एवरीवन सॉल्व करेंगे क्या आप लोग? एक छोटा सा ट्विस्ट दूं क्या क्वेश्चन में? दो दूं क्या? राइट बिलो. He has business income. Business income of 20 lakhs. Full stop. Compute 20 lakhs 20 beta 20 lakhs. Compute total income and tax liability. Total income and tax liability. Assuming his age is 59 and he has interest on savings bank account of 12,000 and lottery income bracket net of TDS. Lottery income bracket net of TDS. समझ गए ना बेटा? Net of TDS is equal to 4,90,000. 4,90,000 and 4,90,000 बेटा. And LTCG
and LTCG on sale of equity shares. LTCG on sale of equity shares. Bracket STT not paid. आउट ऑफ सिलेबस क्या है? आउट ऑफ सिलेबस क्या है? STT पेड है तो 112 अप्लाई करेंगे. STT नॉट पेड है तो फिर क्या करेंगे? 112 में आएंगे, जनरल रेट में आएंगे. विद इन द सिलेबस. LTCG on sale of POGO, sorry, on sale of equity shares. Bracket STT not paid. Out of syllabus क्या? हाँ, STT not paid. Figure is 4 lakhs. अच्छा 1 लाख छोड़ के 3 लाख पे टैक्स लगाना क्या? नहीं. वो 1 लाख छोड़ के 3 लाख पे टैक्स लगाने का कब आता बेटा? When it is covered under 112A. But this is not 112A, this is only 112. At the rate of 20%. नहीं भाई. ठीक है. Full stop. He also paid. अरे एक मस्त क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, मजा आ जाएगा. He also paid life insurance premium. He also paid life insurance premium of 1 lakh. Life insurance premium of what बेटा? 1 lakh. दोस्तों क्लियर है बेटा? इंटरेस्ट अमाउंट कैपिटल फिगर नहीं दिया क्या? नहीं दूंगा बेटा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल दिया पूरा स्टोरी उसका. अरे बोला ना यार, इतना कहानी बोले भाई. इंटरेस्ट अमाउंट कैपिटल किधर है सर बोलते क्या? अब ये टॉन्ट मार रहे. assume that he has no tax. Assume that he has shifted out of default. Assume that he has shifted out of default. Clear, my dear friends? Everyone, sir? Next slide. Apart from all the above, he has received royalty. He has received royalty of 3 lakhs. Royalty of 3 lakhs from Ching Chang. He has received royalty of 3 lakhs from Ching Chang in relation to business set up in Meghalaya. इधर किधर है बेटा? इधर ये बोल रहे किधर है? ऐसा नीचे जाते बाहर वही है ना? इंटरनेशनल बिजनेस सेटअप इन वेयर बेटा? मेघालय. क्लियर फ्रेंड्स? राइट बेटा, नेक्स्ट स्लाइड. क्या नाम है इसका? अरे नहीं, बंदे का नाम क्या है? राइट डाउन. मिस्टर विमल is an Indian citizen. Mr. Vimal is an Indian citizen. Who is always in India. Is an Indian citizen who is always in India. But left India
on, but left India on on 10th Jan 2024, on 10th Jan 2024 to meet his girlfriend in Uganda. To meet his girlfriend in Uganda. क्या बेटा? Meet his girlfriend in Uganda and returned after child. What is that? And returned after 3 years. ठीक है ना बेटा? Friends, last line. Also determine residential status. Also determine residential status. Chalo, come on, 2 minutes time. अरे नहीं रे भाई. It is. Sir, you understand why I gave this question? Now my suggestion to you will be something like this. Listen, sir, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तो थोड़ा टाइम पास कर रहा था युगांडा ये सब करके, बट सच में एग्जाम में टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है. वेयर दे आस्क टोटल इनकम विच विल कम इन एग्जाम फॉर 10 to 12 मार्क्स. 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 12 मार्क का टोटल इनकम पूछते हैं. उसमें टोटल इनकम में क्या करते हैं, सारे हेड्स ऑफ इनकम में से थोड़ा एक एक पॉइंट उठा के क्वेश्चन बना देते. उसको हम बोलते क्या बेटा, टोटल इनकम. उसमें एक दो डिडक्शंस का पॉइंट ऐड करेंगे, जैसा मैंने यहाँ ऐड किया. करेक्ट ना? बट जब टोटल इनकम पूछता है तो रेजिडेंस स्टेटस सब ऐड नहीं करते, बट मैंने ट्विस्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिया. बट जनरली टोटल इनकम का क्वेश्चन एग्जाम में आता है. क्लियर है क्या बेटा? माय सजेशन टू यू विल बी बिजनेस इनकम ज्यादा एफर्ट मत लो, डायरेक्ट फिगर ही है. और वो लॉटरी वाला फिगर तो डायरेक्ट ही आपके पास. एफर्ट लेने का काम किधर है, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का. तो मेरा सजेशन क्या है ना, आप लोग पहले इनकम और हाउस प्रॉपर्टी का वर्किंग फिनिश कर लो पूरा. उसके बाद अपन साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. साथ साथ में कैसे सॉल्व करेंगे, सैलरी फिगर 0, हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी नोट बना दिया, उससे आंसर आ गया. बराबर है ना? उसके बाद पीजीबीपी फिगर तो ऑलरेडी दे दिया मैं आपको. कैपिटल गेन्स फिगर क्वेश्चन में उधर से ले लेंगे. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लॉटरी फिगर लेंगे और वो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक फिगर लेंगे. फिर टोटल, सुनो ना बेटा प्लीज, फिर टोटल लेते अपने को आएगा ग्रॉस टोटल इनकम. फिर डिडक्शन चैप्टर 6 से 80C भी लेंगे और लाइफ इंश्योरेंस वाला, 80TTA लेंगे, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट. दोनों निकालने का अपने को आएगा टोटल इनकम. टोटल इनकम एक बार फिगर आ गया, फिर टैक्स निकालने के लिए ऑन लॉटरी इनकम 20%, लॉटरी इनकम 30%, ऑन कैपिटल गेन्स 20%, बैलेंस इनकम स्लैब रेट्स. कर सकते ना बेटा? बट पहले आपको क्या करना है वो आप लोग करो पहले. नहीं होमवर्क कुछ नहीं, अभी करो, अभी करो. चेक कर लो बेटा, क्वेश्चन में कुछ प्री कंस्ट्रक्शन आएगा नहीं आएगा सब देख लो. आई थिंक आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त समझ में आ गया होगा. प्री कंस्ट्रक्शन आ रहा है क्या? अब मैं एक सजेशन दूं क्या, आप हाउस प्रॉपर्टी वर्किंग करने से पहले 24B का वर्किंग खत्म करो, इंटरेस्ट का. वही कर रहे क्या? हाँ ठीक है, पहले इंटरेस्ट का वर्किंग खत्म करो, बड़ा काम हो जाएगा.
बोलो बेटा, व्हाट हैव यू डन? डिडक्शन से 24 भी चालू करें क्या? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाल दिए क्या? बोलो बेटा, व्हाट इज द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेटा? फर्स्ट जून 21 टू 31 मार्च 23, बराबर है ना? सबका सेम रखेंगे? गुड, आई थिंक प्री कंस्ट्रक्शन सबको क्लैरिटी आ गया अभी। हाँ चलो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना है? 50 लाख इंटू 22/12, समझे? 22/12 कैसा है? 22 महीने का ये। मैडम क्लियर नो? कितना है फिगर? 9,60,916,667 deduction for assessment year 24-25 is equal to 9,16,667 divided by 5, बराबर है ना? कितना है बेटा? 1,83,333। उसके अलावा बेटा करंट ईयर इंटरेस्ट भी तो आएगा। कितना आएगा बेटा करंट ईयर इंटरेस्ट? बोलो ना दोस्तों। करंट इंटरेस्ट आएगा 50 लाख इंटू 10% इंटू 9/12। आप समझे क्या बेटा 9/12 क्यों आया? क्यों आया बेटा 9/12? हाँ, exactly. How much is the figure? 3,75,000. 31st December, the loan is repaid. So obviously I'll take it only for 9 months. So 50 lakh into 10% of 9/12 comes to 3,75,000. Therefore, total interest for assessment year 24-25 कितना बेटा? हाँ, क्या बोल रहे बेटा? 5 lakhs 12 लाख कहां से है बेटा? 9 लाख को ऐड कर देगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? चलो, इसमें से बेटा आप मुझे बताओ, सेल्फ ऑक्यूपाइड इज हाउ मच परसेंट? बराबर है ना? विच इज इक्वल टू 139,583। रेस्ट्रिक्ट करने वाला कोई बात ही नहीं है। अगर 2 लाख के ऊपर आता विल रेस्ट्रिक्ट टू 2 lakhs, बट व्हाई 139? दोस्तों, प्रेस क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? चलो लेट आउट। $4 lakh, आई थिंक अंडरस्टूड मैं क्यों ऐसा क्वेश्चन दिया। थोड़ा अलग
वैरायटी का क्वेश्चन, ताकि सब कुछ कवर करे एक साथ अभी तक जो पढ़े। तो ये इससे, ये वर्किंग से अपना 24B का फिगर्स लड़िए, तो इससे अपने को क्या हो गया, हाउस प्रॉपर्टी का काम अपने को थोड़ा आसान हो जाएगा। इधर तक हो गया सबका, आगे बढ़े पक्का? चलो अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बेटा बोलो मुझे अभी, सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्या सीन है? एनएवी हो गया नील, लेस डिडक्शन ऑफ 24B, कितना फिगर वो 139,583, बराबर है ना बेटा? तो मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड फिगर बनेगा 139,583 नेगेटिव, इससे हो गया मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड का वर्किंग। बेटा समझे ना? आप देखो बेटा सर 2 मिनट सुन लो बेटा एक बार, अभी कोई नहीं लिखेगा, एक बार सुन लो बेटा प्लीज। सेल्फ ऑक्यूपाइड फिगर यहां तक समझ में आ गया ना सबको, एवरीवन? अब लेटआउट में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जीएवी। जीएवी के लिए अपने को क्या करना है? एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, रेंट रिसीव निकालना है। आप मुझे बताओ आप लोग, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? हाँ, इट विल बी 12 लाख इंटू 7/12। समझे क्या 7/12 क्यों आया? अरे ऐसे क्वेश्चन अपन सॉल्व करें पहले भी। इसका घर कब बना? 31 अगस्त, मतलब अप्रैल में जून जुलाई अगस्त 5 महीना घर है ही नहीं। जब 5 महीना ही नहीं तो 7 महीने का ही लेंगे ना। अरे कल अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते ए और बी करके, उसमें 30 जून को उसका घर बना था, तो अपन ने 9/12 किया था ना बेटा। तो वैसे वाला ट्विस्ट का क्वेश्चन है। तो अपने को हमेशा देखना पड़ेगा कि इसका घर कब बना। अगर इसका घर ये साल में बीच में बना तो म्युनिसिपल वाली फेयर वैल्यू प्रोपोर्शनेट लेना है अपने को। चलिए क्वेश्चन करें ना अपन पहले भी, समझ में आ रहा ना बेटा? सर उसके लिए तो मैं कैलकुलेटर लेके चेक कर रहा था वो टाइम पे। आपको क्वेश्चन बोलते वक्त मैं कैलकुलेटर लेके क्यों चेक कर रहा था? वही चेक कर रहा था कि फिगर्स बराबर बैठ रहा नहीं बैठ रहा है करके। समझ में आ रहा है क्या? चलो कितना है फेयर वैल्यू? ये 12 लाख पूरा वैल्यू है क्या? ठीक है, इंटू सॉरी कितना बेटा 5 लाख। फेयर वैल्यू 656, हाँ बराबर है। मैं कैलकुलेटर मेरे को यही फिगर आया, मैं कैलकुलेटर में तब यही चेक कर रहा था। 15 लाख इंटू 7/12 इंटू 7.5%। मैं उसके लिए आपको वो वैकेंसी अनरियलाइज रेंट दिया ना 5 महीना करके, 7 महीना कुछ दिया ना मैंने आपको, ये कैलकुलेट करके दिया ताकि एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा आएगा। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा सॉल्व करने के लिए, अगर आपको रेंट रिसीव्ड ज्यादा आया, एक्सपेक्टेड रेंट गलत भी हो गया, तो आप बोलेंगे ना रेंट रिसीव्ड तो बराबर ही आया, आंसर तो करेक्ट आया, बैलेंस शीट टैली हो गया। बट मेरा डायलॉग हमेशा आपको याद है ना, बैलेंस शीट टैली डजंट ऑलवेज मीन इट्स करेक्ट आंसर। समझे क्वेश्चन? अरे अच्छा लग रहा है या नहीं यार? कम ऑन, वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सर। स्टैंडर्ड रेंट 20 लाख इंटू 7/12 इंटू 75%, बराबर ना? स्टैंडर्ड रेंट 18 लाख है क्या? तो 20 लाख क्या है, कुछ नहीं है क्या? ठीक है, ओके डन। 18 लाख इंटू 7/12 इंटू 75%, कितना है? 7 लाख। आप बोलो मुझे एक्सपेक्टेड रेंट क्या है बेटा? 656 आएगा ना? जरूरी नहीं ना हर बार स्टैंडर्ड रेंट ही कम हो। बोलो, गुड। बोलो बेटा व्हाट इज रेंट रिसीव? रेंट कितना बोला मैंने? 1,20,000 इंटू 12। ये एक्चुअली आना चाहिए था, बट इसमें आया कितना? नहीं आया कितना? 1,20,000 इंटू 7 महीना जो अंडररियलाइज्ड है, माइनस 1,20,000 इंटू 1 महीना जो वैकेंसी है।
कितना है फिगर? अब मैं एक ट्विस्ट दूं क्या? रेंट रियलाइज्ड इफ देयर इज नो वैकेंसी. सर समझ में आ रहा है क्या बेटा? रेंट रियलाइज इफ देयर इज नो वैकेंसी. अगर वैकेंसी नहीं भी होता तो भी रेंट 6 लाख ही होता. Therefore, GAV will become expected rent. अरे समझे क्या बेटा? प्रॉपर्टी कितना महीने है? अच्छा वो 7 मंथ्स ही है क्या? रुक जाओ फिर एक सेकंड, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, फिर पूरा जीरो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा ये फिगर नेगेटिव होने वाला है. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. अपन अनरियलाइज रेंट 7 महीना नहीं करते फिर. 7 महीना 120 नहीं नहीं रेंट मत बना. अनरियलाइज रेंट 7 महीना दिया ना. 4 महीना कर तो हो जाएगा ना? नहीं क्या? रुक जाओ एक सेकंड, आप चेंज मत करो, एक सेकंड रुको रुको आप. 1,20,000 इंटू 7 माइनस 1,20,000 इंटू, अच्छा गड़बड़ है यार ये. समझो 2 महीने करे, माइनस 1,20,000 इंटू 1. आप चेंज मत करो, रुक जाओ मेरे भाइयों बहनों, रुक जाओ. कितना है फिगर? 4,80,000 बराबर ना? रेंट रिसीव्ड इफ देयर वाज नो वैकेंसी, द आंसर वुड हैव बीन 6 lakhs. बराबर. चेंज कर दो, चेंज इनटू 2 months. डन, चेंज इनटू 2 months. अच्छा क्लियर है क्या? यू गॉट द पॉइंट नो? गुड. सो देयरफॉर reason is what beta? Reason is not vacancy. Therefore GAV will become expected rent, which is 656,250. समझ गए ना बेटा? ये 7 महीना क्यों है समझे ना? वो है ही 7 महीने के लिए ना. बराबर है. गुड. गट कम ऑन. क्या हो बेटा? क्या डाउट है? प्रेशर? कुछ नहीं ना प्रेशर. गुड. चलो कहो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज जीए? 656,250 less municipal taxes paid by owner. कितना है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर? म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? नहीं एक्चुअल वैल्यू कितना था? 12 लाख इंटू 75% इंटू कितना है म्युनिसिपल वैल्यू? म्युनिसिपल टैक्स 5%, 45,000. ये म्युनिसिपल टैक्स में कभी 7/12 वो सब मत करो. अपन जब ए का बी का क्वेश्चन भी सॉल्व करें तभी भी बोला था मैंने आपको, म्युनिसिपल टैक्स में मंथ पे डिवाइड मत करो. क्लियर है क्या? बिकॉज म्युनिसिपल टैक्स इज प्रैक्टिकली नॉट ऑन मंथली बेसिस, इट इज बेस्ड ऑन ईयर. और जो है वही है, उसको डिवाइड प्रोपोर्शनली चार्ज नहीं करते कुछ भी ऐसा. नेक्स्ट 6 lakhs. Less deduction under section 24. Come on, 24A. How much beta? 183. ओके. 24B ऑलरेडी अपन करके रखे इसको. 24B ऑलरेडी अपन करके रखे ना बेटा?
418750 लेट आउट का आंसर आ जाएगा अपने को। नाइन, बस इतना ही आया क्या? That's it. Oh, what will be income from house property then? सेल्फ प्रॉपर्टी नेगेटिव कुछ आया था ना? बोलो क्या बोले बेटा? 1 लाख? नहीं, सेट करके बोलो ना, सेट ऑफ करके बोल दो ना। 130 450 नेगेटिव। ये 138 के 130 458 की जगह अगर 230 430 850 आता तो मजा आता था। अगर ये 230 458 आए तो क्या करते थे आप? सिर्फ सेट ऑफ 2 लाख तक करेंगे, बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वो पॉइंट दिमाग में है ना आपको? ठीक है, समझेगा बेटा? अभी क्या वर्किंग हो गया? आंसर हो गया क्या? सिर्फ क्या हुआ? हाउस प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है ना बेटा? बोलो चलो इसके नीचे लिखो सबसे पहले इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? हाँ, अरे he left India during the previous year. सब प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के बाहर गया वो। आज जान में गया, तो जान में गया तो कितना दिन है इंडिया में? Is he in India for 182 days? स्पेशल केस में नहीं आएगा ये? इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्यों नहीं आएगा? Exactly, special case will come only when you leave India for the purpose of employment. He left India, agreed, but he did not leave for the purpose of employment. So he can satisfy first one or second one, and he satisfies second one. And additional तो कैसे भी satisfy करेगा because हमेशा से इंडिया में वो. So his status will become ROR, and once he is ROR, global income will become taxable. Correct ना? समझ रहे क्या आप क्वेश्चन? वो याद दिलाने को पॉइंट दिया था ये, समझे? चलो पुट द हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर Vimal, computation of total income and tax liability of Mr. Vimal for assessment year. For assessment year, which year beta? 24-25. अपने एग्जाम के लिए हमेशा PY is 23-24, AY is 24-25. चलो particulars amount. Take 2 columns. चलो first इनकम फ्रॉम सैलरीज कितना बेटा? नील, कुछ दिया नहीं ना? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना बेटा? नेगेटिव 1,30,458. समझे ना बेटा? पीजीबीपी में क्या क्या इनकम आएगा? एक तो हमें बिजनेस इनकम दिया था 20 लाख, उसके अलावा मैं एक फिगर दिया था रॉयल्टी। अब सुनो बेटा, एक सेकंड सुनो ना प्लीज। आई टोल्ड रॉयल्टी इन रिलेशन टू, पढ़ो ना एक बार लाइन पढ़ो, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट लाइन क्या दिया मैंने। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर चिंगचैंग इन रिलेशन टू बिजनेस इन मेघालय, तो क्या बोलेंगे? टैक्सेबल है नहीं है? टैक्सेबल है। अब मुझे बोलो, अगर मैं मेघालय नहीं बोलता, उसकी जगह बोलता पाकिस्तान, तभी भी टैक्सेबल है क्योंकि ये बंदा ROR है।
अगर मुझे बोलो पाकिस्तान बोलता था और ये नॉन रेजिडेंट होता था, एग्जैक्टली नॉट टैक्सेबल। वापस बोल रहा हूं, पाकिस्तान होता था, नॉन रेजिडेंट होता था, बट वो रॉयल्टी आया उसके इंडिया बैंक अकाउंट में, तो रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम टैक्सेबल। देखो कितना रिवर्स कर रहे हैं अपन, कौन से चैप्टर का किधर रिवर्स कर रहे हैं अपन, समझ में आ रहा है आपको? पक्का? जान कितना फिगर रॉयल्टी का? 3 लाख। बिजनेस रिलेटेड और कुछ है क्या? बिजनेस रिलेटेड और कुछ है क्या? नहीं ना? ठीक है, कितना फिगर? ये हो गया पीजीबीपी। नेक्स्ट, कैपिटल गेन्स में क्या क्या दिया मैंने? एक ही दिया क्या? अच्छा एक ही दिया, तो फिर बोल दो फिर। LTCG ऑन इक्विटी शेयर्स, STT नॉट पेड। याद रख लो बेटा, STT पेड है तो 112A आएगा, नॉट पेड है तो 112 आ जाएगा। इट इज वेरी मच विद इन द सिलेबस। कितना है फिगर? 4 लाख। समझ रहे क्या बेटा? नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या दिया मैंने? इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट कितना बेटा? 12,000। 12,000 ही बोला ना? नेक्स्ट, लॉटरी फिगर कितना है बोलो? सोच के बोलो। अरे मैंने क्या दिया बेटा वहां पे? कैसा कर रहे यार आप लोग? लॉटरी का फिगर क्या बोल रहे बेटा आप? मैंने फिगर क्या दिया? 4,90,000 ना? और दिया वहां पे लॉटरी नेट ऑफ TDS ना? तो क्या जवाब दे रहे आप लोग? एक्सीलेंट, द आंसर इज 7 लाख। अरे लॉटरी नेट ऑफ TDS मतलब TDS कटने के बाद वो फिगर है ना बेटा? कितना रेट TDS कटता लॉटरी में? 30%। तो 30% कटने के बाद 490 का फिगर है, तो कटने से पहले क्या फिगर है यार? क्या मैक्स कर रहे हो यार लोग? इंटू 100/70 करना है ना? अरे ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है आपसे। ओके गुड शिवतेजा, अच्छा क्वेश्चन दिया। समझे क्या? बात करें ना अपन ऐसा क्वेश्चन पहले, तो फिर क्या बेटा ऐसा कर रहे हैं आप लोग? 4,90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70 विच कम्स टू 7 लाख। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते। अभी भी कोई है किसको समझ में नहीं आया? समझा? पक्का? मैडम अंडरस्टूड नो? फर्स्ट ओनली और नो? पहले ही, अभी पहले से ही। अरे समझे क्या आप लोग मेरी बात? अरे नेट ऑफ TDS मतलब TDS कटने के बाद वो फिगर है ना बेटा? प्लीज डोंट डू दैट स्मॉल मिस्टेक प्लीज। चलो, कैन आई प्रोसीड? और कुछ? 5 हेड्स ऑफ इनकम तो हो गया ना बेटा? अब भी जो फिगर आएगा उसको क्या बोलेंगे आप? सर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कॉल इट एज टोटल इनकम क्वेश्चंस, एंड यू शुड फील हैप्पी दैट अपन सिर्फ 3-4 चैप्टर खत्म करे अभी तक, और अपन ये टाइम पे टोटल इनकम क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी में है, तो कितनी बड़ी बात है। ऐसा क्वेश्चन दिखाओ आपके दोस्त को, पहले फट जाएगा उनको क्वेश्चन पढ़ते ही, करना तो दूर की बात है। डू यू एग्री टू दैट? अभी तक ऑलरेडी आप लोग फ्लॉन्ट कर रहे होंगे आपके दोस्तों के पास, ये सेक्शन तेरे को मालूम क्या, ये मालूम क्या, ये सेक्शन पता है क्या, वो सेक्शन पता है क्या? पता है मुझे। ऐसे ही करते हैं क्या बेटा? रात को रिवर्स करते वक्त आप पूछ रहे ये सेक्शन मालूम है क्या, तो बोल रहे ऐसा भी कुछ है क्या, और तेरे को ये नहीं मालूम क्या? और अपन उसको बोलेंगे पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई कर, क्या कर रहा है?
ज्ञान चेप रहे अपन. चलो बोलो बेटा ग्रॉस रेवेन्यू कितना है? 32 lakhs 81,000. अरे शिट, और 20 लाख बढ़ा देना था, सरचार्ज लेके आना था क्वेश्चन में. मार्जिनल भी लाना था क्या? अरे ठीक है रहने दो, बस कोई नहीं. चलो नेक्स्ट, लेस. डिडक्शंस अंडर चैप्टर. बोलो बेटा क्या आएगा? एटी सी. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 बोला ना मैं? 1 लाख बोला क्या? अगर 2 लाख बोलता था तो क्या करते थे? अगर मैं 1 लाख की जगह 2 लाख बोलता था तो क्या करते थे आप? वंडरफुल. 80C का लिमिट है 1.5 लाख. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कांट टेक मोर देन. करेक्ट नो? क्वेश्चन में चेंज करो 2 लाख और इधर ले लो 1,50,000. सर रिवीजन कर रहे सर अपन. सर सच बोलो क्या? वी आर एक्चुअली रिवाइजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. वी आर रिवाइजिंग क्वेश्चन लेके अपन रिवाइज कर रहे. ठीक है नेक्स्ट 80. टीटी बी नहीं आएगा क्या? अरे इसका एज तो ज्यादा है ना, 59 है उसका एज. above 60 or senior? 60 and good, very good. इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट कितना है? ब्रिलियंट. टोटल इनकम ब्रैकेट राउंडेड ऑफ as per section 288A. It is not B. C नहीं है. कितना है बोलो? 31,21,540. पीक्स नो? सुबह मजा आया? पिक्चर अभी बाकी है. हो गया क्या आंसर? मैंने और कुछ पूछा आपसे? टैक्स लायबिलिटी आप लोग करेंगे क्या? करेंगे आप लोग? ठीक है मैं वेट करता 2 मिनट. करो आप. आई वेट 2 मिनट्स. यू डू. क्या हो बेटा? बोलना, मुझे बोलना, मैं बोलता. क्या बोल रहे हो? हाँ? कौन सा लॉटरी बोल रहा है क्या? 115 बीबी. बीबी जे इज ऑनलाइन. बीबी इज अनएक्सप्लेन्ड. हाँ सिर्फ बीबी है बस. बीबी मतलब लॉटरी है. बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, एवरीथिंग इज. भाई ज्यादा मत सोच भाई. टैक्स कैलकुलेट कर.
हो गया क्या सर? जब 31, 21, 540 टोटल फिगर है, इसमें मुझे बताओ ऑन लॉटरी एट व्हाट रेट बेटा? अंडर सेक्शन 115 बीबी कितना होगा बेटा? वो 2,10,000. नेक्स्ट, ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 20% अंडर सेक्शन 112, वो भी अलग करना पड़ेगा ना? कितना एलटीसीजी फिगर? 4 लाख से क्या? व्हाट इज द फिगर? और बैलेंस इनकम ये बैलेंस फिगर कितना है? 20 lakhs, 21,548 स्लैब रेट्स. स्लैब रेट्स क्या लेंगे? 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 20%, एबो 10 30%. शिवम क्या हो बेटा, क्या डाउट है? ये 20 लाख 21,000 कैसा है सोच रहा क्या? 31 लाख 21,540 है ना? 31 21,540 में से 7 लाख निकाल दे, 4 लाख निकाल दे. कर दिए क्या? कितना है? 4 लाख 962 total. We will add 28,350 32 Final answer of this beautiful question of Vimal is 5,27,320 is what I understand. कुछ गलत है तो बताओ. शिवम समझ गया ना? वो 20 लाख 21,000 कैसा आया? जो टोटल इनकम है ना, उसमें से लॉटरी हटा दे और कैपिटल गेन हटा दे, बाकी जो वो स्लैब रेट्स ही है. नहीं नहीं, टोटल इनकम से ग्रॉस. आप टैक्स किस पे निकाल रहे? तो फिर अभी आप एग्जाम लिखने वाले हैं ना बहुत जल्दी, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन है. ऐसे मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, आई मीन टैक्स कैलकुलेट करने का वैसे ही करना है आपको. टोटल इनकम जो फिगर रहेगा उसमें से इतना हटा के उसका टैक्स, बाकी पे स्लैब रेट. I think this kind of question gave us some terrific clarity on concepts.
कितने सारे चीजें याद हो गए? एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के बाकी सब लेके आ गया उसमें मैं। एक बार लगा था रबर या कॉफी लेके आओ, बट ठीक है जाने तो बहुत ही हो गया। रबर का क्या परसेंट है? 65। कौन सा रूल है? कॉफी का कौन सा रूल है? कॉफी का कैटेगरी क्या है? ग्रोन एंड क्योर्ड, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड। ग्रोन एंड क्योर्ड 75-25, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड 60-40। टी रूल 8 60-40। गुड, ब्रिलियंट। What a brilliant question we solved, and what a wonderful quotation we have. Do something today that your future self will thank you for. ऐसा kind of question solve करे तो our future tomorrow when we go to other chapters, they will tell thank you because we solve this kind of questions. समझा? Sir, I strongly believe that you have thoroughly enjoyed this question. Everyone, sir. Question मजा आया क्या? पक्का बेचा? 100%. And I think after this question we got a terrific clarity on pre-construction interest also. वो तो अपन आराम से कर लेंगे अभी। प्री-कंस्ट्रक्शन सबको क्लियर है ना अभी? बेटा कुछ तो बोलो। चलो डन। Tell me guys, come on. Let's once recall everything from beginning. Ready? बोलो बेटा, what is section 27, 29, 210? Average rate of tax, which is nothing but total tax divided by total income into 100. 225A, 231, 229C, maximum marginal rate, highest rate of income tax. Section 3, Section 4, Section 5, Section 172, shipping business of non-resident. 174, person leaving India permanently or for long time. 174A, AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose, not AOI, AOP. I told you already. 175, person likely to transfer property to avoid tax. 176, 288A, 288B, 115BB, casual incomes, betting, gambling, lottery, cow games, card games, winnings from horse race, tax at what rate? 30%. 115B, J, jungly, unexplained incomes, unexplained investments, unexplained expenditure. वहां पे एक पॉइंट बोला था आपको याद है तो, amount borrowed or repaid on हुंडी otherwise than through account pay check. ये भी एक लाइन है, हमेशा unexplained मत करो, वो भी एक पॉइंट है। सब मिलके 60%, head plus 25% plus 4%, total
टोटल 89 नहीं है क्या? 60 प्लस 25 प्लस 4, इफेक्टिव इज 78%. याद है ना? गुड. 112 long term capital general rate. It also covers equity shares where STT is not paid, covered in syllabus. 112A, long term capital gain on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid. We will tax at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh. What if STT is not paid? 112. What if it is not equity shares but something else? 112. What if it is not covered in 112A? 112. 111A. कैसा रोते रोते बोल रहे सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेम एज अबव. Short term capital gain on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid is taxable at the rate of 15% on. अब एक क्वेश्चन पूछूं क्या जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? बोलो, हाथ उठाओ, बोलो बेटा. अरे बोलना बेटा, हिंदी में बोल. क्या करती है? क्या परचेस करती है? क्या शेयर्स? क्या शेयर्स? क्या शेयर्स? इक्विटी शेयर्स. वो वर्ड चाहिए, ठीक है, बट हिंदी में नहीं चलेगा. करेक्ट? नो. कम ऑन, व्हाट इज आंसर? ए म्यूचुअल फंड which invest at least 65% in equity shares of domestic company, or it is investing in another mutual fund 90% of equity share, and that mutual fund again investing 90% in equity shares of domestic company. याद है क्या? क्या है भाई? Wonderful. Next, get back. Come on. That is 111A. Next. 87A. याद है ना? 5 लाख, 12,500, 7 लाख, 25,000, 7 के ऊपर भी चलेगा अगर आपका टैक्स 7 लाख के ऊपर का जो इनकम है उससे भी ज्यादा है तो, क्योंकि किसी भी दिन आप टैक्स इनकम से ज्यादा पे नहीं करेंगे. बराबर है ना बेटा? एवरी वन सर? गुड. नेक्स्ट. और कुछ सेक्शन है यार. 56 गिफ्ट मोर देन 50,000. नेक्स्ट. 80TTA interest on savings bank account. Deduction, the rate deduction will be interest or 10,000, whichever is lower. 80TTB interest on savings bank also, deposit also for resident senior citizen, and the reduction is interest or 50,000, whichever is lower. बराबर है ना? नेक्स्ट. फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया क्या? नहीं. 115BAC बराबर है ना? याद है ना? आई थिंक नाउ वी हैव गॉट गुड क्लैरिटी. नो डिफॉल्ट क्या है, ऑप्शनल क्या है. सर बहुत सारे लोग, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, किसी पे कमेंट नहीं करता हूं, बट बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिसको डिफॉल्ट में ऑप्शनल में फर्क ही नहीं मालूम कि किस में क्या कर रहे. ये बहुत बड़ा डेंजर है, वो नॉर्मल नहीं. अगर तुमको डिफॉल्ट में ऑप्शनल फर्क नहीं समझ में आ रहा ना, गया वो बच्चा, उसको लास्ट डे तक भी समझ में नहीं आता वो फर्क क्या है, और सोचते बैठेगा कि मैं क्या करूं टैक्स में. So this clarity is very, very important. I think we are fully clear, no? Friends, what is section 6.1? 6.6. Additional conditions. बराबर है ना? Section 6.1a. Deemed. Second condition क्या है? Total income other than foreign sources. More than 15 lakhs.
Don't forget that word other than foreign sources. Good, no? Good. Section 6.2 and 6.6. 6.3. Section 7. Income deemed to be received in India. Section 9. 10.1. Agriculture income from land in India. 10.7. Allowances and perquisites paid by government of India to an Indian citizen working outside India is exempt. Good. Rule 7A, 7B, 8, 7. Other than tea, coffee and rubber. Correct, no? Rule 4. Conditions for reducing unrealized rent. Rule 115. If rent is in foreign currency, we will convert that in Indian rupees based on last day of previous year. That too will take buying rate. That too will take SBI rate. Yaad hai kya? Section 22. 23.1. 23.2. 23.5. If house property is held as stock in trade for a period of 2 years from the end of financial year in which certificate of completion of construction is obtained from competent authority, will take value as nil. Yaad hai na? 17 flat, 3 flat. Good. 24A. Standard deduction is around 30% of NAV. 24B. Interest on borrowed capital. 25. Interest payable outside India is not allowed as deduction if tax is not deducted at source and there is no person in India who may be regarded as an agent. 25A. Taxability of recovery of unrealized rent and arrears of rent. Will tax in the year of receipt after reducing what? Standard deduction at the rate of 30%. Dosto correct, no? Everyone speak out. Good. 26. Co-ownership. How many cases are there? कोई भी केस नहीं. Co-ownership. Some of them. $27. How many cases are there? Clear, no friends? Are you getting full clarity on these points? क्या कर रहे बेटा? So this is the effort what we have taken since past so many days to complete some beautiful topics like basic concepts, residential status, agricultural income, income from house property, like this some terrific topic we have discussed. And ऐसे भी रहेगा एक दो सेक्शन जो हम पढ़े ऑलरेडी पर यहाँ पे लिखा नहीं मैंने. Sir, clear है क्या? Everyone, sir? चलो, couple of interesting points before I proceed next. Listen. Sir, there are some important golden rule of income tax. More for knowledge. सुन लो ध्यान से. क्या हो बेटा? हाँ? हाँ? समझा नहीं? Debit all expenses and losses you are telling. Debit all tax, credit all deductions. Wow. So there are some golden rules of income tax here. Number 1. All revenue receipts are taxable unless exempt. I am sure आपको याद है exemption में deduction में फर्क क्या है. Exempt incomes are those income which will not form part of your total income, and deductions are those which are reduced from gross total income. And two types of deduction. Deductions based on next. All revenue receipts are taxable unless exempt, whereas all capital receipts are exempt unless taxable. What a brilliant line, man. What a brilliant line. Come on, read that line. All revenue receipts are taxable unless exempt, whereas all capital receipts are exempt unless taxable. इसका मतलब क्या है? What is revenue? What is capital? पहले ये तो बोलो.
Revenue is generally recurring in nature. Capital is what we get generally on sale of an asset. Correct, my dear friends? So what they are trying to tell in the law, recurring जो भी है वो पक्का पक्का टैक्सेबल है. जब तक हम ना बोले वो एग्जम्प्ट है. अगर कैपिटल है वो हमेशा एग्जम्प्ट है. जब तक हम ना बोले वो टैक्सेबल है. आप बोलेंगे हम बोलेंगे ही नहीं, बट आपको बोलने की इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा. सर बहुत तेज है. सर क्लियर ना बेटा? कम ऑन, व्हाट इज द गोल्डन रूल? फर्स्ट वन, all revenue receipts are taxable unless exempt. All capital receipts are exempt unless taxable. स्टूडेंट आस्किंग लिखो क्या सर? रिजल्ट नहीं है, समझ में आ रहा है ना आपको? बस क्लियर है ना बेटा एवरीवन? नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनो ना बेटा. सर हम लोग जब शॉपिंग जाते, मैंने से जब शॉपिंग जाएंगे मतलब Amazon फ्लिपकार्ट ये नहीं, बाहर, करेक्ट ना? फोन से बाहर भी दुनिया है, फोन के बाहर भी दुनिया है ना बेटा? एक्चुअल शॉपिंग. So for example, let us say we went to one shop to purchase some clothes. When we went to shop to purchase the clothes, let us say I went to a shop, I purchased one shirt. I came to the billing counter to make the payment. I came to the billing counter to make the payment. When I came to the billing counter to make the payment, billing counter के पास बाजू में एक छोटा सा डब्बा है जिस पे लिखा है for the benefit of cows, if interested please donate. समझ रहे हैं क्या? कभी देखे क्या आप लोग ऐसा? बिलिंग काउंटर बाजू में एक छोटा सा डब्बा है जिस पे लिखा है गाय के लिए आपको डोनेट करना तो करो भाई. अभी आप मुझे बोलो व्हेन आई गो टू द बिलिंग काउंटर विल दैट फेलो टेल इसमें पैसे डाल वरना ठोक दूंगा तेरे को, ऐसा बोलेंगे क्या कोई? इज इट मैंडेटरी टू पुट मनी इन दैट? नाउ लेट अस से आउट ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स काउस आई हैव पिक्ड अप 100 rupees note and I put that 100 rupees in that box. I put 100 rupees in that box. Now you tell me, will that 100 become the income of shopkeeper? Speak out. That the concept is called as diversion of income. ये फर्स्ट चैप्टर में है एक्चुअली. क्या बोलते बेटा इसको? डाइवर्शन ऑफ इनकम. डाइवर्शन ऑफ इनकम मीन्स वेयर इनकम इज डाइवर्टेड बिफोर अक्रूवल. वेयर इनकम इज डाइवर्टेड बिफोर, one more word is called application of income. That's a case where शॉप वाला आपसे पैसे ले रहा है, लेने के बाद थोड़ा सा डोनेशंस कर रहा है वो, पर जो पैसे लिया वो तो इनकम है ना उसका. फ्रेंड्स, गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ अस? स्पीक आउट माय डियर फ्रेंड्स. पक्का क्लियर? 100%. So is diversion of income taxable in our hands? No. Application of income? Yes. समझ में आ रहा है क्या बेटा? पक्का क्लियर है क्या ये कहानी? Our hands मतलब I'm talking about shopkeeper point of view. समझ रहे क्या सब लोग? Everyone sir. शुभम क्या हुआ? Good. What is the golden rule of income tax? Come on. All revenue receipts are taxable unless exempt, whereas all capital receipts are exempt unless taxable. That's it. Are we clear with this point, everybody? Chalo, my dear friends. Today, let's start discussion about one more new interesting topic. Let's start one brilliant topic, and without any disconnect to what we have already discussed, I'll not trouble you much. We will not start some topic which is very difficult as such. We'll start some topic which is very simple, comfortable and easy. That kind of topic we'll start. And in that topic also, today the topic what I'm going to discuss with you will be something which you'll enjoy a lot. I'm going to talk with you today, what is the taxability of gift? And I'm sure you'll enjoy that concept, obviously. Who are those people who don't like gifts? बोलने के लिए सब बोलेंगे गिफ्ट, अरे नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, बट अंदर दे पूछने का क्या है? नहीं नहीं मैं गिफ्ट लेता नहीं, तू जेब में डाल. क्या बेटा? ब्रेक? ब्रेक चाहिए सच में आपको? सीरियसली? ठीक है ले लो, आप भी ब्रेक ले लो, क्योंकि मैं चालू करा तो मैं 1 घंटे तक मैं किसी का भी नहीं सुनता बात. ले लो, अभी ले लो. Take a break, no problem. Take a short break and come back. After that, we'll talk about gifts.
check. Hello. Yes. Yes, come on, get back, my dear friends. Friends, stop talking now. Enough. Come on. So, friends, if you look at the story now, we are done with the topic of basic concepts, residential status, agricultural income. We have completed one brilliant head of income called income from house property. The next interesting topic we are going to start is, my dear friends, we are going to talk about a very small interesting topic, one more head of income known as income from other sources. Like how house property is a simple topic, income from other sources is much more simpler topic with some interesting concepts. And we have got 3-4 very important concepts in income from other sources. And out of the 3-4 very important concepts, one such important concept is taxability of gift. Clear, my dear friends? And given that we have got some basic idea about taxability of gifts, we will talk more detailed about gift concept today and become perfect in gift concept. Are you guys ready and excited to learn about the taxability of gift, my dear friends? Yes? But before that gift, we'll put the heading as income from other sources. We'll write couple of points, then we'll start the gift concept. So first thing before that, listen to me, then we'll write. That is, sir, this interest income, dividend income, dividend income, as well as your gift, they are always taxed under income from other sources. Apart from that, if there is any other income which is taxable, but it is not covered by first 4 heads of income, then also will tax under income from other sources. That is why this income from other source is also called as residuary head of income. Income from other source is also called, what do you call it, beta? Residuary head of income. In schooling in science, you would have heard about something called residue. अगर आपको याद है तो पानी में अगर if you put some mud in water, the mud will come and sit in the bottom, which is technically called residue, which is left out. अगर कोई इनकम है, अरे लॉजिक सी बात है यार, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक लैंड है, ओपन लैंड है, जो मैं रेंट पे दिया, वो सैलरी में नहीं आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो बिल्डिंग नहीं है, लैंड अपर्टेनेंट नहीं है, पीजीपी में नहीं जाएगा, कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, तो किधर आएगा? अदर सोर्सेस. अपन ने वो पॉइंट लिखे भी थे ना, income from renting of vacant plot of land, we will tax under income from other sources. बात करें ना बेटा. Next, in the same lines, we also discussed that income from subletting, मतलब रेंट पे लेके रेंट पे दिए, तभी भी अदर सोर्स में जाएगा ना बेटा. क्यों? क्योंकि हम ओनर नहीं है. याद है ना बेटा everyone? Speak out, my dear friends. Come on, put the heading in your book. On a fresh page, put the title income from other sources. Income from other sources. Bracket. Section 56 to 59. Bracket section 56 to section 59. 2 मतलब 2 ब्रैकेट में नहीं है भाई. TO इंग्लिश. TO. सेक्शन 56 to 59. अरे समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप क्या लिख रहे? 56 to 59 ऐसा लिख रहे क्या? 56 TO to 59 59. क्लियर ना बेटा? सर राइट बेटा. चार्जेबिलिटी सेक्शन. Chargeability section. Chargeability section. Section 56. Chargeability section, section 56. Incomes such as dividend, incomes such as dividend, comma gift, income such as dividend, gift and interest, income such as dividend, gift and interest is taxable. Income such as dividend, gift and interest is taxable under
अंडर IFOS. IFOS मतलब क्या है बेटा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. अंडर IFOS. फुल स्टॉप. Further, comma, if there is any income, further, if there is any income, further, if there is any income, if there is any income which is taxable, further, if there is any income which is taxable, but further, if there is any income which is taxable, but it is not covered under, further, if there is any income which is taxable, but it is not covered under other heads of income, but it is not covered under other heads of income, but it is not covered under other heads of income, then such income is taxable. Such income is taxable under IFOS. Such income is taxable under IFOS. समझे क्या बेटा? एवरीवन सर? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, सोच के बोलना. क्लियर? टीचिंग इनकम वेयर टू टैक्स? रेगुलर एक्टिविटी है तो पीजीबी पे जाएगा, रेगुलर नहीं है तो अदर सोर्स में जाएगा. इन द सेम वे रॉयल्टी इनकम रेगुलर एक्टिविटी है तो पीजीबी में जाएगा, नहीं है तो अदर सोर्स में जाएगा. अरे लॉजिक समझ रहे आप लोग? क्लियर है क्या बेटा? इस एवरीवन सर? फ्रेंड्स, एक बात बोलूंगा मैं, सुनो बात वेरी क्लियरली लिसन. सर, प्रायर टू 2019, in 2016 and 17, 2 years, 16 and 17, correct, 16 and 17, 2 years, I have done correction of papers, of institute correction of papers I have done, where they physically used to send papers to us, 200-250 papers के आसपास भेजते थे घर पे, and I used to correct the papers and give it back to them. But last 2-3 साल से physically बंद कर दिए, it's all online correction now. मतलब टैबलेट पे पेपर डाउनलोड करेंगे, उधर ही टिक करके उधर मार्क्स दे देंगे, इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा वो. बट चेक तो कोई बंदा ही करेगा ना, OMR शीट थोड़ी स्कैन करके कोई मशीन करेगा. आंसर्स तो किसी बंदे को चेक करना पड़ेगा ना यार. So when I used to do correction, my dear friends, institute used to pay some money for the correction done. Now let me tell you honestly, whatever income I got, I have shown under income from other sources. अरे थोड़ा सा अमाउंट आया, साल में एक बार आया, उसको मैं क्या पीजीबी में दिखाऊं उसको? समझ में आ रहा है क्या बेटा? Everyone sir? Next. Sometimes in a whole year, sometimes I keep getting some dividend income on the shares what I have got. Where do you think we'll show dividend income? वो तो clearly other source ही है. Getting my point, everybody? So lot of incomes can come in income from other sources. Are we getting clarity, everybody? But we are first going to talk about the most brilliant and wonderful discussion, that is about taxability of gift. Something super duper amazing which we'll enjoy a lot. There is a tremendous concept in that which we need to understand. But we all have just some basic knowledge on the taxability of gift, and the basic knowledge what we have is that gift is taxable if it is more than, but उसमें कहानी बहुत है, बहुत मतलब बहुत है. Are you clear, everybody? All of us? Now listen. First of all, very, very interesting point. Gift concept is given by which section? 56 to 10. First and foremost important point. We are talking about the taxability of gift. And this gift is taxable in the hands of recipient. In the hands of what beta? Recipient. If it is capital assets in the hands of recipient. If it is what beta? Capital asset in the hands of recipient and not stock in trade. जो गिफ्ट उसको मिला उसके लिए वो असेट बनना चाहिए, स्टॉक नहीं. समझ में आ रहा है क्या बेटा? चलो क्या लाइन का वापस पढ़ो. गिफ्ट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ हुम बेटा? रिसिपिएंट. इफ इट इज
capital asset in the hands of recipient and not stock in trade. So getting clarity everybody? All of us better? Up suno. Carefully listen. Carefully listen. Sir. Now, let us say there is a person Shivateja. There is one of my friend Mr. Raviteja. Now what this friend has done is he gave me a gift. He gave me a gift of iPad which is worth 75,000. He gave iPad as gift worth 75,000 on the occasion of my birthday. Example. उतना सीन नहीं है. Clear है क्या बेटा? I got a gift of iPad of 75,000 from my friend on the occasion of my birthday. Question is it taxable? क्या लग रहा है आपको? Speak out, my dear friends. Is it taxable? कितना वैल्यू है भाई? हाँ. Is it taxable? How many of you say it is taxable? Good, everybody. Wonderful. The answer is not taxable. Shweta is asking, sir, why? That's a question, no? For that question, I'll answer today. आज के बाद अपने को गिफ्ट का कॉन्सेप्ट पूरा कंट्रोल में आ जाएगा. Are we ready about it? Everyone, sir? Listen now. Carefully listen. How will you listen? There are 5 categories of gift. हो गया? Wonderful. There are 5 categories of gifts. How many अरे बस करो यार. How many categories of gift are there? 5 categories of gifts. 5 categories of gift are: number 1, sum of money. Sum of money मतलब not SOME, थोड़ा पैसा नहीं है वो. Clear, no? Sum of money. Clear है क्या बेटा? Number 2, movable property received without consideration. Chalo beta, what is that line, sir? Movable property received, what, my dear friends? Without consideration. Movable property received, what, my dear friends? Without consideration. Now my straight question to you, sir, always in our brain we think that gift means something coming free. That is what our brain tells, no? कुछ भी फ्री में आया मतलब वो गिफ्ट है अपने लिए. But income tax says कुछ भी फ्री में आया वो गिफ्ट है. और गिफ्ट का दूसरा तरीका भी है. फ्री में नहीं आया बट मार्केट वैल्यू से कम में आया. That is third point, which says movable property which is received for inadequate consideration. बेटा ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है क्या आपको? बोलो ना बेटा. अब एक लाइन सुनो. सम ऑफ मनी इफ aggregate is greater than 50,000. 51,000 क्या होता? 50,100 है तो टैक्स नहीं करेंगे क्या? यही प्रॉब्लम है. यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, holding more than 51%, nonsense. If you look at Company Law, Bare Act, the language used is more than 50%. 50.5 is also a subsidy company only. पर बचपन से वो कीड़ा डाल के रखा 51%. हाँ, exactly, correct. Anyways, I'm not here to teach law, forget it. भाई क्लास के बाद समझाता चाहिए तो अब तो सुन ले. Come on, वापस आ जाओ. Sum of money if aggregate is more than 50,000. Second one, movable property received without consideration. If aggregate value is more than 50,000. अरे समझ में आ रहा है क्या भाई? बोलो ना बेटा. क्या हुआ? हाँ, के नहीं दिख रहा क्या? वही सोच रहा मैं भी.
के दिख रहा क्या बेटा? वंडरफुल. क्या कर रहे भाई? Some are busy in doing this only. क्या हो रहा है यार? सर ये आवाज जाके ज्यादा बाहर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लोग गलत समझेंगे. बस करो यार, कम ऑन, आ जाओ वापस काम पे. चलो बड़ा फर्स्ट पॉइंट. सम ऑफ मनी मतलब थोड़ा पैसा, पूरा पैसा. सम SU, sum of money if aggregate is more than 50,000. Second, movable property received without consideration if aggregate is more than 50,000. Third point, movable property received for inadequate consideration if difference in aggregate is more than 50,000. Difference means what? Simple logic है बेटा, simple logic. समझो बेटा, I got something as gift जिसका मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए से, जिसका मार्केट वैल्यू कितना है? 1 लाख है. मुझे फ्री में नहीं मिला, मैंने उसके लिए पैसे दिया, बट मैं 20,000 दिया. 20,000 दिया, कितना का फायदा हुआ मुझे? 80,000. इज इट मोर देन 50,000? लॉ इज टेलिंग टैक्सेबल. लॉ इज टेलिंग वन पॉइंट, व्हाट इज टैक्सेबल इज नॉट जस्ट समथिंग विच इज कमिंग फ्री. व्हाट इज टैक्सेबल इज जो पुकड़ में आया, सॉरी जो फ्री में आया वो तो टैक्सेबल है. उसके अलावा जो फ्री में नहीं आया, आपने पैसा दिया बट मार्केट वैल्यू से कम में आया, और जो फर्क है वो 50,000 से ज्यादा है, जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. इंग्लिश क्लियर ना? बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या है? सम ऑफ मनी इफ एग्रीगेट इज मोर देन 50,000. सेकंड, movable property received without consideration if the aggregate is more than 50,000. Third one, movable property received for inadequate consideration if difference in aggregate is more than 50,000. समझ रहे क्या आप लोग? बोलो बोलो बोलो, सबको क्लियर है क्या? अब मेरा एक क्वेश्चन है. यस, शिवतेजा गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड. क्या गिफ्ट आया? iPad. What is the value? 75,000. Did I get on marriage? No, I got on birthday because I told you already marriage है तो taxable नहीं है. आज बात करेंगे मैरिज के बारे में, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आज, मतलब टैक्स के बारे में. ठीक है ना बेटा? सिर्फ टैक्स के बारे में. डन. टेल मी नाउ, सो व्हेन गिफ्ट ऑफ iPad इज कमिंग 75,000, वो टैक्सेबल है नहीं है? नहीं है. क्यों नहीं है? अच्छा आपने लिखा नहीं है, बट क्यों? अरे यहां पे तो बोला ना मूवेबल प्रॉपर्टी है करके. iPad मूवेबल नहीं है क्या? हाँ, फ्रेंड रिलेशन है. फ्रेंड रिलेशन कैसा बना बेटा? हाउ इज फ्रेंड रिलेटिव? इवन BFF आल्सो इज नॉट रिलेटिव. अरे रिलेटिव नहीं है ना बेटा. अरे फ्रेंड इज नॉट रिलेटिव. ऑल डायलॉग्स विल टेल प्रैक्टिकली ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, वो सब डायलॉग है, बट रिलेटिव इज नॉट रिलेटिव. सर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर इज रिलेटिव. सर आप लोग बोलते ना सर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, हाँ गर्लफ्रेंड फ्रॉम अनदर मदर, ऐसा बोलते क्या? बोलते नहीं बोलते ना? लोगों का हाइट्स हो गया आजकल. सर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई एम राइटिंग हियर, चलो 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 आ जाओ वापस. When I am writing here categories of gifts, 5 category. Second category, what did I write? Movable property received without consideration if it is exceeding more than 50,000. Actually iPad what I got is a movable property. Did I pay any consideration for that? इसका more than 50,000 है तो technically taxable होना चाहिए, but मैं बोल रहा हूँ not taxable. आपने बोला हाँ, आप बोले ना, ठीक है, but उसके पीछे लॉजिक भी तो होना चाहिए. The logic is law has defined what is covered in movable property, and they started with the word movable property means. मतलब it's called what kind of definition? Exact definition. बस इतना ही covered है, ना कुछ कम, बस. Clear my dear friends? Movable property means, see what they covered. Shares and
रुको, सिक्योरिटीज क्या है? शेयर्स एंड डिबेंचर्स. तो डिबेंचर लिखे तो फिर बॉन्ड. सिक्योरिटीज कवर्स एवरीथिंग, नो? सिक्योरिटी कवर्स डिबेंचर, बॉन्ड्स, यूनिट, सब कुछ आएगा उसमें. प्रेफरेंस शेयर सर आए ना रे शेयर्स में. सम आर टेलिंग सर रिडीमेबल शेयर्स में, सर इररिडीमेबल शेयर्स में. करेक्ट नो? सम आर टेलिंग सर कन्वर्टेबल शेयर्स में. क्लियर नो? CCPS, NCCPS, everything will come there only. Correct no? Some are telling sir fully convertible, still covered. Clear my dear friends? Chalo, shares and securities. Next point, very 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 important points. Listen carefully my dear friends. Shares and securities. Second one, huh? नहीं, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. नेक्स्ट, जेम्स बॉन्ड. बोलो कुछ भी जो मन में आए वो बोलो. ज्वेलरी. शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी. नाउ बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज ज्वेलरी? डोंट टेल डिपेंड्स. हेलो, लॉ डिफाइंड. लॉ हैज डिफाइंड व्हाट इज ज्वेलरी. Law has defined what is jewelry. Let me explain that to you in detail. What is jewelry? ठीक है ना? Ready for that? Listen. Now what is covered in definition of jewelry? In jewelry definition there are two parts. Part number 1, ornaments made of gold, silver, platinum, बोलो steel, copper, ornaments made of gold, silver, platinum or any other precious metal. अरे वो सब स्टोन से रे, मेटल की बात कर रहे अपन. क्या रूबी, एमरल्ड, डायमंड कुछ भी बोल रहा है यार, वो सब स्टोन से. सर डायमंड इज अ स्टोन, रूबी एमरल्ड इज अ स्टोन, platinum is a metal. Clear ना? देखो वापस आ जाओ, रुको. Ornaments made of gold, silver, platinum or any other precious metal. Whether or not containing, don't talk please. Whether or not containing precious or semi-precious stones. Clear my dear friends? Everyone, बोलो बेटा, come about the first line. Ornaments made of gold, silver, platinum or any other precious metal, whether or not containing precious or semi-precious stones. Clear now beta? Next, one more point is also there in definition of jewelry. That is precious or semi-precious stones, whether or not set in any article or furniture or utensil, or what beta? Utensil. Very very interesting line. Chalo beta. Sir, what is that we are trying to understand? First of all, what is movable property? Why we are trying to understand movable property? Because gift concept has told what will tax is only movable property. और मैंने आपको बताया था iPad है तो taxable नहीं है. अगर आपको ये क्लैरिटी चाहिए iPad टैक्सेबल नहीं है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या कवर्ड है. मतलब आपको 100% आपको ये तो समझ में आया कि मूवेबल प्रॉपर्टी में iPad नहीं है, तो और क्या है फिर, वो तो पता जानना चाहिए ना दोस्तों. चलो, व्हाट इज कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी? कम ऑन. शेयर्स एंड सिक्योरिटी. सेकंड वन, ज्वेलरी. नाउ व्हाट इज ज्वेलरी? लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम or any other precious metal, whether or not containing precious or semi-precious stones. Second, precious, semi-precious stones, whether or not set in any article, furniture, utensil.
फर्नीचर मतलब मालूम ना, यूटेंसिल क्या होता? हाँ एग्जैक्टली, बर्तन, बराबर है बेटा? चलो अब मेरा क्वेश्चन से सोच समझ के जवाब देना. स्पीक आउट माय डियर फ्रेंड्स. इज गोल्ड रिंग ज्वेलरी? गोल्ड रिंग विथ डायमंड? गोल्ड रिंग विदाउट डायमंड? गोल्ड चेन? गोल्ड चेन विदाउट डायमंड? गोल्ड चेन विथ डायमंड? नेक्स्ट क्वेश्चन. लूज डायमंड्स, सिर्फ लूज डायमंड्स है, इट्स नॉट पुट इन एनी आर्टिकल, इट इज ओनली लूज डायमंड्स. लूज डायमंड्स इज ए ज्वेलरी? आंसर इज 100% yes, because it's covered in second point. समझ रहे मेरी बात? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, मजाक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लूज डायमंड्स इज ए ज्वेलरी? स्पीक आउट एवरी वन सर. पक्का? नेक्स्ट. गोल्ड ईयर रिंग्स? गोल्ड ईयर रिंग विदाउट डायमंड? गोल्ड ईयर रिंग विथ डायमंड? गोल्ड ईयर रिंग विथ रूबी? गोल्ड ईयर रिंग विथ एमरल्ड? ओनली प्योर गोल्ड ईयर रिंग? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन. सिल्वर प्लेट, सिल्वर प्लेट जिस पे घर पे रोज खाना खा रहे, सिल्वर प्लेट जिस पे रोज घर पे खाना खा रहे, वो गिफ्ट में आया. समझ रहे मेरी बात? सिल्वर प्लेट, सिल्वर प्लेट. नाउ टेल मी, इज इट ज्वेलरी? सोच के जवाब दे मेरे को. ये सिल्वर प्लेट है ज्वेलरी? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? अरे बहुत लॉजिक है मेरे क्वेश्चन में. ये सिल्वर प्लेट है ज्वेलरी? 100% आंसर इज नो, बिकॉज दोनों पॉइंट में भी कवर नहीं है. सेकंड पॉइंट में कवर होना है तो उसमें कुछ ना कुछ स्टोन रहना चाहिए. सेकंड पॉइंट में नहीं आएगा. आप बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट में आ सकता है ना? क्या सिल्वर प्लेट सर पे रख के घूमेंगे क्या? इज इट एन ऑर्नामेंट? पहली बात, सिल्वर प्लेट इज नॉट एन ऑर्नामेंट. फिर आप बोल रहे सर यूटेंसिल कवर करें ना, आप ही बर्तन बोले ना. अरे अभी मैं बोलता हूं सिल्वर प्लेट विथ डायमंड. आंसर इज यस, बिकॉज कम्स इन सेकंड पॉइंट. अरे समझ रहे क्या मेरी बात? सिल्वर प्लेट विथ डायमंड? यस. सिल्वर प्लेट विदाउट डायमंड? बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड इन सेकंड पॉइंट, इज नॉट कवर्ड फर्स्ट पॉइंट, इट्स नॉट एन ऑर्नामेंट. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? स्पीक आउट एवरीवन. गोल्ड वॉच? गोल्ड वॉच विथ डायमंड? गोल्ड वॉच विदाउट डायमंड? प्लैटिनम वॉच? 100% answer is because it's an ornament. Because it is an ornament which is made of gold or silver or platinum or any other precious metal. ये नहीं है, ऐसा मत देखो. एग्जाम्पल बोला मैंने. अरे समझे क्या यार? Getting my point? What is jewelry, my dear friends? Everybody, all of us. Next question. Think properly and tell me. Gold chain? Yes. Gold bracelet? Gold bracelet without diamond? Gold bracelet with diamond? Gold biscuit? Answer is no, because gold biscuit is not an ornament and it is not covered in second point. समझ लेंगे? अच्छा मतलब गोल्ड बिस्किट आया तो टैक्सेबल नहीं है क्या? रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बात करेंगे. अरे आई रिएक्ट लाइक दैट सो दैट यू विल रिमेंबर बॉस. आई मेक फन ओनली बिकॉज आई वांट टू रिमेंबर. समझ में आ रहा है क्या आपको? एवरी वन सर? चलो गेट बैक. शेयर्स एंड सिक्योरिटी. सेकंड पॉइंट, ज्वेलरी का मीनिंग आप लोग समझ गए ना? शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स. आई होप यू नो डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग्स एंड पेंटिंग्स. यूज ऑफ कलर्स एंड नो यूज ऑफ कलर्स. Drawing is no use of colors, painting is use of colors. Sketches. Correct my dear friends? Drawings, paintings, sculptures. What is sculpture? Idols. Correct my dear friends? Come on. Shares and securities, jewelry, drawings, painting, sculptures, archaeological collections. Archaeological collections means what? Some unique item pieces nahi re bhai, antique pieces. अरे antique pieces sir, archaeological collection, पुराना past का. So correct no my dear friends everybody? चलो पढ़ो वापस, come on. Shares and
securities, jewelry, drawings, painting, sculpture, archaeological collections. Next one. Any work of art. Any artworks is also covered. Any artwork, something like some kind of glass painting, some craft kind of thing, which is unique work of art. And in exam, they will not ask you, is it work of art? Please identify. किधर है सीए कोर्स में वो खुद बताएंगे कि वर्क ऑफ आर्ट है वो. करेक्ट ना. आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसको स्टोन्स है तो कुछ तो थ्रेड वर्क है तो कुछ तो बांधनी वर्क है तो कुछ तो मत बोलो आप. समझ ना. वो आपके टैलेंट आपके पास ही रख लो फ्रेंड्स. So let that be with you for personal reasons, not for exam purpose. Are you clear है क्या यार? Everyone sir, you're getting what I'm saying? Everybody, all of us. Any work of art. Last point. क्या हो बेटा? बोलना. कुछ नहीं. Very good. Any work of art. Last one, bullion. B-U-L-L-I-O-N. Bullion means not bull. Bullion means pure form of gold or silver. That is gold coins, gold biscuits or gold bars. Bar मतलब ये नहीं. Bar. Bricks जैसा रहते हैं ना बड़े बड़े. अरे मुझ पर दिखाते हैं ना बहुत सारे मुझ पर चोरी कर लेते हैं. हाँ वही वाले. बहुत पिक्चर में दिखाते हैं ये सब चोरी करना ये सब नॉनसेंस जो प्रैक्टिकली होता नहीं है. अपन देख के बोलते वाह ऐसा अपने को एक बार मिलना चाहिए. जिंदगी सेट. जिंदगी सेट. एक बार पकड़ गए set. Correct. They are all fascination in movies. Just watch and leave it. That's all. Anyways, clear with this part everybody? अनुज भाई किधर खो गया भाई? किसकी ख्यालों में? Whom are you dreaming about? किसी की याद आ रही है क्या? मैं बात करूं क्या? नहीं? क्या? कृष्णा. What is a Krishna? अच्छा. Anyways, get back. अरे यार please ध्यान दो यार. Come on, please my dear friends, come on. Anyways, are you clear with this part everybody? एक बात बोलूं क्या? Movable property का definition खत्म हो गया. अब मुझे बोलो, बोलो. अब मुझे बोलो, इसमें iPad covered है क्या? That is the reason why I wrote the answer. It is not taxable because it is not covered in movable property. समझ रहे क्या? अब मैं एक बात बोलूं क्या? Imagine for a second you got a gift of one BMW car which is worth 50 lakhs from your friend. Answer is not taxable because car is not covered in movable property. For one more example, let us say Hardik Pandya has got a gift of one 2 crores worth car from his friend. Answer is not taxable. I'm giving practical example only. And in fact, on the occasion of marriage, he got gifts worth almost 20-30 crores. Nothing is taxable because gift on the occasion of marriage is not taxable. Gift is not an ordinary thing, man. Very brilliant thing. So getting my point, everybody? So Shivateja को रवितेजा से iPad मिला तो क्या है आंसर? Not taxable. अगर कार मिला तो? बाइक मिला तो? गोल्ड वॉच मिला तो? समझ में आ रहा है क्या? Friends, speak out. Come on, what is taxable is only movable property. बोलो बेटा, what is covered in movable property? Shares and securities. सर थोड़ा ऐसा रिदम आना चाहिए यार. Shares and security, jewelry, drawings, painting, sculpture, archaeological collections, work of art and bullion. एक और बार बोलो. Shares and security, jewelry, drawings, painting, sculpture, archaeological collections, work of art and bullion. इसके अलावा और कुछ भी टैक्सेबल नहीं है. कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं. Law clearly covers only this. In exam, this many times question has come where they told gift received from friend, which is car worth 5 lakh. Student is telling 5 lakh more than 50,000 taxable. But the answer is what? Not taxable. Why? Car is not covered in movable property. Don't bring your feelings and emotions. No feelings and emotions, boss. Only sections and subsection. That will only protect you. Keep my words. So getting my point, everybody?
Come on, what is covered in movable property? Shares and security, jewelry, drawings, painting, sculpture, archaeological collections, work of art and bullion. Student is asking, sir, land मिला तो, building मिला तो, अरे movable property की बात कर रहे हैं ना अभी, immobile पे आए क्या? Land movable है, immobile है, movable, और मतलब कैसा ऐसा क्या? हाँ शक्तिमान. So getting my point, everybody. Anyways, fun part. सबको समझ में आया ये point? Everyone, sir. Now one more question. Does gift cover only something which is coming free? No, it can also cover something which is not coming free, but it is coming at less than market price. Market price 2 लाख है, पर अपने को 70,000 में मिल रहा है. Difference 130. क्या होगा? Taxable. How much is taxable? 130 is taxable. Friends, speak out. Next example I give. Let's just say for a second, one of my friend gave a gift of one bike to me. Bike का market price है 4 लाख रुपए, but बेचारा मेरे को दिया सिर्फ 1.5 लाख रुपए में दिया, तो मुझे फायदा हो गया 2,50,000. 2 lakh? How much is taxable? Nothing is taxable because bike is not covered in movable property. I think gift concept is slowly coming in control. When I say it is not covered in movable property, then what is covered in movable property? Shares and securities, jewelry, painting, sculpture, archaeological collection, work of art and bullion. Bullions क्या होता? Bullion. It's not bullions. It is bullion. Some are telling bullions. अरे कुछ तो बोलते क्या यार? Sculpture. क्या बोल रहे यार? क्या कर रहे यार? अरे जवाब दो यार. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें कुछ तो. चलो बेटा, what is covered in movable property? Come on. Shares and security, jewelry, drawings, painting, sculpture, archaeological collections, work of art and bullion. अरे फिर से bullions बोलते? Who is that bullions? कोई तो इधर से आया आवाज, ये लॉट से आवाज आया. Who is that bullions? Who told? Come on. Are we clear with this point, everybody? So when Shiva Teja gets iPad as gift, is it taxable? Why? Because iPad is not covered in movable property. Then what is covered in movable property? Shares and security, jewelry, drawings, painting, sculpture, archaeological collection, work of art and what is it? You should not use the word bullions, man. If you use the word bullions, that is bullshit. Anyways, सर मजा आ रहा है? चलो, कितने कैटेगरी गिफ्ट है? 8. अरे क्या नमूने रे, कितने कैटेगरी गिफ्ट है पूछा मेरे भाई. ये 8 किधर से आया? अच्छा वो 8 है क्या? शेयर से सिक्योरिटीज वो वाला 8 है क्या? How do you get such crazy thoughts, man? How? Come on. How many categories of gift are there? 5. What is the first category? मतलब पैसा. टमाटर सर कैश में आया क्या? चेक भी हो सकता है सर, डीडी भी हो सकता है क्या? हाँ. ऑनलाइन भी हो सकता है क्या? हाँ. सर फोन पे सर? हाँ. गूगल पे सर? हाँ सर. पेटीएम सर? हाँ सर. क्या पे? भारत पे? हाँ. Any pay is okay, provided you pay. Sir, clear with that point? So what is the first one? Sum of money. Sum. It is not SOME sum. It is SUM sum. It is sum of money. Second, movable property received without consideration. Third one,
movable property received for inadequate consideration. Clear, my dear friends? Is iPad covered there? Car, bike, watch. No. Gold watch? Specs, shirt, shoes, trouser, belt, gold watch. Clear, no friends? Silver plate, diamond plate. Exactly. डायमंड प्लेट मतलब सिल्वर प्लेट में डायमंड चिपका है रे भाई. सिर्फ डायमंड से प्लेट कैसा बनता? टू मच ऑफ इमेजिनेशन. अरे समझ में आ रहा है क्या बेटा? क्या हो बेटा? क्या बोलना बोला मुझे बोलना प्लीज. बोल भाई, इतना शर्मा रहा क्या? अरे बोलना दोस्त, क्या है? बोलना भाई, बोल क्या हुआ? दोस्त बोलना दोस्त, बताएगा या नहीं? हेलो, बोलो, कुछ तो बोलो. इतनी देर पूछा ना. क्या बाकी के 2 पॉइंट्स क्या है? चलो बेटा, बोलो फर्स्ट पॉइंट. शेयर्स एंड सिक्योरिटीज नहीं रे. गिफ्ट का फर्स्ट पॉइंट क्या है? सम ऑफ मनी. सेकंड पॉइंट, मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन. एग्जाम में जाके मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में आया, थोड़ा पैसा दे के आया, वैसा लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएगा. क्लियर ना? मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन. थर्ड वन, मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. फोर्थ पॉइंट, immovable property. What is covered in immovable property? Land and building. Received without consideration. And it's okay. Control, sir, control. Control, it's okay. Happens. And stamp duty value is greater than 50,000. Sir, I hope you know that. मैडम थोड़ा फोन अंदर रखेंगे क्या? फोन पे नहीं है क्या? ओके ठीक है, ध्यान दो. Come on. So what is stamp duty value? Sir, listen. Sir, I hope you know that for every property there is a government approved value, technically called stamp duty value. शायद आपको पता होगा ये. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो आपको गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता है. रजिस्ट्रेशन टाइम पे जब रजिस्टर को जाएंगे तो वहां पे जब रजिस्टर को जाएंगे स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता है. स्टैंप ड्यूटी प्रैक्टिकली कौन पे करता है? बायर पे करता. एंड इन सम स्टेट्स इट इज 8%, सम स्टेट्स इट इज 7.5%, सम स्टेट में 8.5% भी है. इन तेलंगाना इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 7.7%. महाराष्ट्र में 8% के आसपास है लगभग. मतलब अगर करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी आप लिए तो आपको 8 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एज स्टैंप ड्यूटी. Correct, my dear friends? Stamp duty value means government approved value. समझ रहे क्या बेटा? सबको क्लियर है क्या? कितने लोग ये वर्ड सुने पहले? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू. ओ मेजॉरिटी ऑफ देम हैव हर्ड. फाइन. समझ में आ रहा है ना आपको बेटा? चलो, व्हाट आर द 4 categories? Come on. What we discussed so far? Sum of money. Second, movable property received without consideration. Next one, movable property received for inadequate consideration. Next, immovable property received without consideration, and the stamp duty value is more than 50,000. And here bracket I'll write one interesting word, not aggregate. Each transaction we will see separately, but first point, second point, third point we use the word aggregate. Immovable property में aggregate नहीं करेंगे, एक एक transaction को अलग से देखेंगे. समझ में आ रहा है क्या बेटा? Next, last point. I'm sure you can guess this point. Immovable property received for inadequate consideration, and
difference is greater than 50,000. Difference is greater than 50,000. So getting clarity, everybody? Speak out, my dear friends. And difference is greater than 5% of consideration. Difference is greater than 50,000 and difference is greater than 5% of consideration. इसका मतलब क्या है? सुनो. I'll give some examples. Please listen. Yeah? Listen very clearly. Please carefully concentrate. So let us say one person, Mr. A. B is his friend. He gave house property as gift. House property as gift. Stamp duty value is 8 lakh rupees. कितना है stamp duty value? And B gave it as gift to A. B gave it as gift to A. Let us say for 7.3 lakh. 7. At what value you give? 7.3 lakhs. What is the difference, beta? 70,000, which is greater than 50,000. Dosto, every sir. Next, ruk jao. How much is 5% of 7.3 lakhs? So this transaction will be not taxable. Other words, it will be taxable only when ये लाइन पढ़ो, अभी लाइन पढ़ो, वापस पढ़ो एक बार, कोई नहीं, वापस पढ़ो. Immovable property received for inadequate consideration and difference is greater than 50,000 and difference is greater than 5% of consideration. अब मुझे बताओ, is the difference greater than 50,000? Yes. But is the difference greater than 5% of consideration? Oh, wait a second. It should be more than, difference should be more than 50,000 and the difference should be more than 5% of. Let me give an example like this. Okay, listen carefully here. Listen carefully here. How much is the difference? 70,000. Is it more than 50,000? Is it more than 5%? 5% कितना हुआ? 36,500. Is it more than 5%? Both conditions are satisfied. Answer will become taxable. वापस रिपीट करो बेटा, ध्यान से सुनो. When it will be taxable is, दोनों का डिफरेंस जो है 50,000 से ऊपर होना चाहिए और 5% से ऊपर होना चाहिए. समझ में आ रहा है बेटा? अब एक और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा. देखो बेटा, देखो. House property is given as gifts. Correct, my dear friends? Let us say at a value of 5 lakh rupees. How much value? 5 lakhs. Stamp duty value 5.3 lakhs. How much is difference? 30,000. समझ रहे क्या आप लोग? How much is 5% of 5 lakh? Huh? So if you observe carefully, difference is greater than 5% of 5 lakh, but it is not more than what, beta? So straight answer, not taxable. समझ रहे का केस? सबको क्लियर है क्या बेटा? लॉ क्या बोल रहा है? सिंपल सी बात है बेटा. लॉ बोल रहा है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में आया, हम तभी टैक्स करेंगे अगर आपका दोनों का डिफरेंस जो है वो 5% से ज्यादा होना चाहिए और 50,000 से ऊपर होना चाहिए. इस केस में 5% के ऊपर है, पर 50,000 के ऊपर है क्या? नहीं. अब नेक्स्ट केस देखो. नेक्स्ट केस देखो बेटा, ध्यान से सुनो. केयरफुली यू लिसन. फ्रेंड्स, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. हाउस प्रॉपर्टी is given as a gift for 20 lakh. For what value?
बेटा सुनो ना बेटा प्लीज, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है बेटा 20,70,000। केस समझ रहे क्या बेटा? आप अभी मुझे बताओ डिफरेंस कितना है? दिस 70,000 इज ग्रेटर देन, but it is not more than 5% of 20 lakh. Therefore, difference is not taxable. एक्चुअली डिफरेंस 50,000 के ऊपर है। डिफरेंस जो है 50,000 के ऊपर है। वापस बोल रहा बेटा, डिफरेंस जो है वो 50,000 के ऊपर है, बट फिर भी टैक्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस 5% के नीचे है। सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? पक्का दिमाग में जा रहा है क्या कॉन्सेप्ट? विदाउट एनी डाउट इज इट गोइंग टू योर ब्रेन्स? 100% माय डियर फ्रेंड्स, पक्का बेटा? चलो, कितने कैटेगरीज ऑफ गिफ्ट है? 5 कैटेगरी गिफ्ट है। क्या है 5 कैटेगरी? सम ऑफ मनी, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, थर्ड वन मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, फोर्थ वन immovable property received without consideration, next immovable property received for inadequate consideration. लास्ट केस में टैक्सेबिलिटी तभी आएगा अगर डिफरेंस 50,000 के ऊपर है और डिफरेंस 5% से ऊपर है। सबको क्लैरिटी आ रहा है क्या बेटा? एवरी वन सर? पक्का? चलो एक ब्रिलियंट एग्जांपल लेते, देन विल कंप्लीट द स्टोरी। ठीक है ना? And we have a lot of discussion to be done. Something related to gift coming from relative and all is not taxable. That also we'll talk. Friends, clear? बोलो ना बेटा प्लीज, कुछ तो जवाब दो। चलो देखो अभी, listen carefully, listen. So let us say for example, one person, Mr. Pranay, received following gifts. Ultimately गिफ्ट्स किसके हाथ में टैक्सेबल है बेटा? रिसिपेंट के हाथ में टैक्सेबल है ना बेटा? लेट्स से ही गॉट फॉलोइंग गिफ्ट्स। लेट अस से नंबर 1, कैश ऑफ 20,000 फ्रॉम फ्रेंड। करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? यूपीआई 25,000 फ्रॉम बेस्ट फ्रेंड, नॉट नॉर्मल फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। ठीक है ना बेटा? एवरीवन, नेक्स्ट पेंटिंग वर्थ 1 लाख, 1 लाख ज्यादा हो गया, पेंटिंग वर्थ 20,000 फॉर फ्री। ठीक है ना? नेक्स्ट बुलियन वर्थ, अरे चुप करो प्लीज, बुलियन वर्थ 1 लाख, ही गॉट इट फॉर 70,000। फ्री में नहीं आया, 70,000 दिया पैसा वो। ठीक है ना बेटा? समझ रहे क्या क्वेश्चन? नेक्स्ट, ही गॉट 1 कार वर्थ 3 lakhs फॉर फ्री। ठीक है? हाउस प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40,000। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हाट बेटा? 40,000। दैट ऑल्सो ही गॉट फ्री। किधर? बाहर। ठीक है? एंड ही गॉट 1 नेकलेस, अच्छा नेकलेस क्यों आएगा इसको? ही गॉट 1 गोल्ड चेन वर्थ 25,000 फॉर फ्री। अरे समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, he got 1 sculpture worth 50,000. He got it for 35,000. 1,50,000 का 35,000 में आया उसको। सर समझ में आ रहा है क्या बेटा? Everyone. And he also got a gift of 1 rose worth 1,000. Example. Don't question the. अब वो गोल्ड रोज ऑर्नामेंट है क्या?
Next. He got one shirt worth 500 free. सब चेहरा बना रहे यार, 100 रुपए का रोज, ठीक है? खुश हो गया अभी? चलो। अरे क्या हो बेटा? अरे वो उसका प्रॉब्लम है, आप इतना क्यों लोड ले रहे? चलो, नाउ टेल मी, चलो चलो बस करो अभी, बस करो अभी, बस बस बस। नाउ टेल मी हाउ मच इज टैक्सेबल? कैलकुलेटर उठाओ, सोच समझ के बोलो, हाउ मच इज टैक्सेबल? कैलकुलेटर नहीं चाहिए क्या? मर्जी आपकी, कुछ भी। Which one, बेटा? चलो, कितना टैक्सेबल है? चलो चलो बस करो, बस करो, बहुत बहुत डिस्कशन चल रहा है। बोलो कितना टैक्सेबल है? क्या बोल रहे थे? कुछ कुछ भी ही। बोलो कितना टैक्सेबल है? अरे कैसे कर रहे यार, बोलो ना यार जवाब। Some of them are making sounds on calculator now. ऐसा करे तो ऐसा करते, ऐसा करे तो वैसा करते, क्या है यार? What is taxable is 3,30,000. Like that you should not think. What is taxable is 0. The reason is because the limits what you have, 50,000 लिमिट है ना आपका, वो एक एक कैटेगरी का अपना अपना लिमिट है. That 50,000 is not for 5 categories put together. अपना अपना कैटेगरी का अपना अपना 50,000 लिमिट है. अब मुझे बताओ, कार तो इग्नोर करो, रोज को इग्नोर करो, घटिया शर्ट को इग्नोर करो, समझ में आ रहा है ना बेटा? अब मुझे बताओ ये दोनों मिलकर कितना हुआ? सो आंसर इज नॉट टैक्सेबल. और मुझे बताओ ये पेंटिंग और गोल्ड चेन दोनों विदाउट कंसिडरेशन है. फ्री फ्री वाले है ना? फ्री मतलब क्या? विदाउट कंसिडरेशन. कितना है फिगर? फिर से वापस आंसर नॉट टैक्सेबल. ये बुलियन और ये स्कल्पचर, ये दोनों एक कैटेगरी है. सर क्या बोल रहे सर, दोनों एक कैटेगरी कैसा हुआ? अरे दोनों एक कैटेगरी बिकॉज दे आर रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. बराबर है ना बेटा? बोलो फर्क कितना है? वापस दोनों का फर्क मैंने दिया 45,000, नॉट टैक्सेबल. एंड हाउस प्रॉपर्टी 40,000, अगेन द आंसर इज नॉट टैक्सेबल. आई होप यू एंजॉयड द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देने का पर्पस इतना ही था, यही कम्युनिकेट करना था कि 50,000 का जो लिमिट है 5 कैटेगरी मिलके नहीं है, अपना अपना कैटेगरी का अपना अपना लिमिट है. क्या है वो अपना अपना कैटेगरी? क्या है वो? सम ऑफ मनी. Movable property received without consideration. Movable property received for inadequate consideration. Immovable property received without consideration. Immovable property received for inadequate consideration. Are we getting clarity, everybody?
All of us, my dear friends, extremely brilliant concept. I hope gift का मजा आया. But अभी कहानी खत्म नहीं हुआ. We need to learn something called gift coming from relative is not taxable. Now big question is, who is that fellow called relative? Shall we start? हो गया? बना दिया चेहरा? Sure? पक्का? ठीक है. What are the 5 categories of gift? Sum of money, movable property received without consideration, movable property received for inadequate consideration, immovable property received without consideration, immovable property received for inadequate consideration. And last वाला category में बेटा taxable तभी होगा अगर difference 50,000 का ऊपर है और 5% का ऊपर है. I'll make you write all this. Next class we'll write all these things in detail. समझ में आ रहा ना बेटा? रुको जरा. What is covered in movable property? Shares and security, jewelry, drawings, painting, sculpture, archaeological collections, work of art and bullion. Clear, my dear friends? If it is car, bike, iPad, what is the answer? Not taxable. Clear, my dear friends? That's it. Balance we'll write later, next class. Thank you so much, guys. Take care. See you all tomorrow. Bye-bye. Thank you.